Hello, viewers. Welcome to the YouTube channel of Life and More. Today we have with us artist Varunjay Sahni. He's having an exhibition of his abstract artworks. Welcome, Mr. Sahni. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for having me on the show. Yeah, it's our pleasure. And I'll begin with the very beginning of your life. You are the grandchild of Balraj Sahni, the noted actor, and son of Parikshit Sahni. Acting runs, creativity actually, I would say, runs in your blood. Yeah, I would definitely. It resonates with me. Mhm. So, why did you choose to differ from the acting to the artwork, to the Uh, painting? I guess I believe every form of art is equivalent to painting or music or acting for that matter. Like for my father, painting was something that he loved doing, and but it was maybe destiny or fate that he landed up as an actor. He wanted to become more of a writer, director, painter, but Okay. he had to Okay. follow the. I mean, once you there, I mean, he Mhm. wrote Pavitra Papi, but Mhm. fortunately, he was acting in it. So, Mhm. but why I chose this medium of Mhm. expression is because I believe I can say a lot. Certain things that I cannot comprehend in words. I cannot comprehend in just being there as a Mhm. person in the physical form. There is more Mhm. than that, and so I as my beginning childhood, my grandmother basically was a painter. So we Mhm. used to see a lot of colors in the home and everything, and Mhm. I was drawn towards it also, and it was something like I felt like talking to them, and I could hear voices from colors like red, blue, green. Because me being a Mhm. single kid, I in the early days, nuclear family, obviously single kid requires some attention to explore himself. So Mhm. painting became my medium of exploration towards the inner journey of myself and the journey which is there outside the world. Mhm. You never thought of going into the acting field? The acting never impressed you? No, no, nothing of that sort. I was Mhm. in SMS. It's a school in Jaipur. And the first Mhm. time I was on stage, I was playing the role of a donkey, and I loved it. The reason I got that role Mhm. was because I was able to mimic the sound exactly what how the animal would have said. Great. His Mhm. so I didn't have much dialogue. So all I had to do was yank. So, Okay. but it was my first, I would say, venture into the field of acting. I love more of theater because Mhm. it has the same frequency of a painting. I mean, you have to think there and then. You can very well modulate yourself Mhm. on stage rather than in being in front of the camera. And in fact, my grandfather and my father also love the fact that theater Yeah. is far more. Uh, I would rather say they are. It is like theater is the heightened or higher self of yourself or the cinema. You know, Mhm. I would put it Mhm. like that. Yeah. Mhm. So cinema, that means the rehearsing part didn't gel well with you. No, I mean it didn't gel well. मेरा ध्यान भी नहीं गया उस तरफ. अच्छा. I was so busy painting कि मैं उस तरफ ज्यादा मेरा रुझान हुआ भी नहीं कभी. ओके, ओके। सो आपने अपनी दादी को देखते हुए पेंटिंग यू वर ड्रॉन टुवर्ड्स आर्ट बिकॉज़ ऑफ योर ग्रैंडमदर, My nani, my mother's mother, नानी, ओके, नानी, योर नानी। सो दादी वहाँ से और आपने दादी हुँ, सॉरी दादी और दादाजी को तो मैंने देखा ही नहीं. I mean, not in ओह! my physical self. Yeah. ओके, I mean, they ओह! both passed away way before I came in the ओके, world. ओके, 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 ओके। So मेरी जिंदगी उनके साथ कुछ इस तरीके से जुड़ी है कि
उनकी लिखी हुई किताबें हैं, उनके लिखे हुए उपन्यास mm, हैं, पिक्चर्स हैं, mm, उनसे ही आप mm, समझ पाते हैं. mm, So it's a very raw journey into the man's life who was a mm. legend. Legend, legend. Yeah, Yeah, a lovely actor. yeah. Very natural. Yeah, very natural. True. So आपने नानी को देखते हुए आप आर्ट की तरफ आपका रुझान हुआ, आपने बोला। जी, जी. तो आप कितने बड़े रहे होंगे जब आप व्हेन यू स्टार्टेड पेंटिंग, हाउ ओल्ड यू मस्ट बी? I was 5 years of age when I actually started off properly. When it was there within myself, this is something that not just makes me feel happy, it makes me feel alive. Hmm. I mean, colors are like my soul. All the white lights are, if you Mhm. bifurcate the white light, it comes into a vibrio. अगर Hmm. एक सर्कल है जिसके अंदर ये सारे कलर्स हैं, उसको हम जोर जोर से घुमाएंगे तो वो वाइट हो जाता है. तो Hmm. it was very spiritual, it was very enjoyable. uh, and Nani being the kind of artist and teacher, principal, she could You very well know, see कि you know her name? जी. May I know her name? Miss Kamla Sharma. Okay. So she was Yeah. in Jaipur? She used to be she started working as a principal in आर्य कन्या अलवर. छोटा Okay. सा स्कूल था, शुरुआत की थी उन्होंने. And then Mhm. it went all the way up to PG college and everything. तो वो उन्होंने, एंड इट वाज गर्ल्स कॉलेज, सो एक विमेन को Mhm. अपलिफ्ट करने का जो एक जज्बा था उनमें, Mhm. वो उस जमाने में जिंदगी में उस कदम पे कदम से कदम मिला के चल रही थी समाज के साथ, कि जो हम आज True. बातें करते हैं, आई हाँ मीन, जी। दीज वर लाइक, दे वर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल्स विद इन हुँ, देमसेल्फ. एंड हुँ, हुँ, to be taught and be nourished by somebody like that, do हुँ, also have that scenarios where females को लेके मैं थोड़ा सा definitely मेरे को एक ये होता है कि नहीं, it is one and the same thing. I mean, I believe that females are more powerful. हुँ। They are more, they have something within themselves which the males should learn, definitely. थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। सो आपने 5 साल की उम्र से यू स्टार्टेड पेंटिंग। सो व्हाट हैपेंड Yeah, आफ्टर and दैट? uh, लाइक थ्रू योर स्कूल, जस्ट टेल अस योर जर्नी थ्रू द स्कूल, throughout जर्नी ऑफ throughout आर्ट my थ्रू द स्कूल। all right, throughout my school life, I was very quiet. Never used to talk much. Um, एंड पेंटिंग की तरफ मेरा रुझान ज्यादा रहता था. आई मीन, आई जितना मुझे अभी भी अच्छे से याद है, मेरी हिस्ट्री की किताबों के अंदर वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस आते थे, और मुझे इरिटेशन ये होती थी कि ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? तो मैं उनको कलर अच्छा। कर रहा था, फिर वो इतना ज्यादा हो जाता था आर्ट की. आई इफ इफ द टीचर आस्क्ड मी टू स्टैंड अप एंड रीड, दैट वाज समथिंग ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं दिख रहे कि शब्द क्या है. तो अच्छा, वो भी यू एक वर था. ड्रॉन प्लस टुवर्ड्स आई द मीन आई वाज, पेंटिंग। I mean, for me, painting might have started as a expression. It started as a way of understanding myself and talking, because I was not too talkative. मैं ज्यादा बात नहीं करता. इसलिए नहीं कि मैं कर नहीं सकता, पर वो एक होता नहीं है. आई मीन, मेरे बेंट ख्याल ऑफ से वो माइंड नहीं था। रंग, हाँ मतलब वो रंग कुछ इस तरीके से मेरे शब्दों को बयान कर देते कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही होती थी. अच्छा। तो मैं थोड़ा सा, ओके। आई मीन, it just started off and I used to paint regularly. I still paint regularly. ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब मैं नहीं पेंटिंग करता. आज की तारीख में जब मैं नहीं पेंट करता तो मेरी, आई हैव टू ट्विन डॉटर्स, तो वो मेरे को मोटिवेट कर देती हैं, यू मस्ट डू इट. Either it is my mom, my wife, everybody is always uplifting me to keep on creating, because I believe now it is not just my profession, it is the kind of madness. Uh, I've reached that level where every single second there is so much happening and create. I need to create something. मतलब मैं exhibition, I've started off with the exhibition. I wanted people जो आ रहे हैं और जो आएंगे, there is a canvas there. I would like everybody to, you know start off with something, make something out there. उसी के adjacent मैंने भी
करना शुरू कर दिया है. Okay. So it is more like, I would rather say, the air I am breathing is art. Mm. It is going inside art and coming out in the form of colors. ओके सो आपने स्कूलिंग के बाद आई आई सपोज आप थ्रू आउट योर स्कूल यू मस्ट बी विनिंग ऑल द पेंटिंग कॉम्पिटिशंस इन योर स्कूल डिड यू पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स तो मैंने ज्यादा किए नहीं, मैम. I mean, I was the kind of kid who never used to. I was more into art only. या तो ये खेल रहा होगा या ये पेंटिंग कर रहा होगा, ये दो काम करने आते हैं मुझे. और रही बात एकेडमिक्स की, तो हाँ, मैंने अपना क्वालिटी टाइम क्लास के बाहर बहुत बिताया, विद नॉट डूइंग मच ऑफ होमवर्क्स. एंड वो ऑब्वियसली जैसे ही होता था मैं डायरी रख देता था और बाहर चला जाता था. वो इतना ज्यादा हो गया था. Because I mean, ओके for me, art was the kind of, maybe, it was the learning. Jैसे I recently, I have a very old friend. He was in school with me. We never did talk much. और हम थोड़े दिन पहले ही through a friend मिले. And he loves traveling. He loves enlightenment and all spirituality. So I was talking to him, and I just realized while he was traveling that, like art, art is not just an expression of your soul. It is an expression of the higher consciousness you are. I mean, we believe we are human beings. We are more than that. I mean, just don't exist. You see, be more. Everybody has that. Everybody, and males have it, females have it. There are very beautiful phenomenons in the society and the world around who have gone beyond their self to create a या universe within a planet. It is so beautiful to see that. So I just told him that, traveling is not about vacation. It is it is to learn. It is to understand life. You know. And he also could resonate with what I could say. And I believe that every person on this planet has a uniqueness within themselves. And it is not just the artist within. Your entire life, the whole human self of yours is beautiful. We fail to see it, but we are doing it all the time. या And when a person like me sees it, I am as thrilled as a 5-year-old kid still. then you're drawn towards putting that in the paint on the canvas Yeah, I do. I mean, my paintings are more towards the inner process. Um, I believe that everything that happens to us in the world outside has something to do within ourselves. So that's if true the that's inner so self true is, blooming, everything outside would be blooming. And ये bloom होता है. I mean, I have realized it. जैसे I could I learned it in a way कि कई बार 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं और कई बार 24 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि घड़ी तेज या धीरे चल रही है. घड़ी वैसे ही चल रही है. ये सिर्फ आप यहाँ से कहीं से, so हाँ you can live a life within hours or minutes, or the entire life would be very small for you. It's all your take. yeah that's so profound and that's so true Yeah. so हाँ स्कूल के बाद आपने did you join an art college I did multiple courses in the field of interior designing, क्योंकि perspective समझने में मेरे को थोड़ा सा, I mean, I am not, I don't believe there should be a perspective, because the world is abstract. I have always seen it. I mean, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं. तो मैं घास देख रहा हूँ घर में, एक घास दूसरे से अलग है, दिखने में एक जैसी है पर अलग है. और अगर ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट लगेंगी. तो
mm, when I was learning, going through processes like 6 months courses in the field of interior designing, एक हमारे जयपुर में ही आर्च इंस्टीट्यूट करके था. इट इज एट जनता स्टोर. mhm, तो घर के पास में ही है. उस टाइम मैं mhm, साइकिल ज्यादा चलाया करता था. तो स्कूल के बाद मैं साइकिल से घूमते घूमते पहुंच गया. एंड आई कुड सी mhm, दैट देयर वाज समबडी, आई मीन वहां पे कोर्सेज थे एंड ऑल. मेरे ख्याल से ज्ञान प्राप्त करने में कोई हानि नहीं होती. कुछ नया सीखना mm, एक निरंतर प्रोसेस है, सभी को करना चाहिए. चाहे वो आप छोटी से छोटी चीज करें या बड़ी से बड़ी चीज करें. अब छोटी और mhm, बड़ी एक मैं कहूंगा कि एक स्ट्रक्चर्ड वे है सोचने का. mhm. पर अगर इन सब चीजों हाँ, को वो भी एक हटा दें, सिर्फ सीखें, तो हुँ, बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो हुँ, इंटीरियर डिजाइनिंग था, उसमें ज्वेलरी डिजाइनिंग था. हुँ, हुँ, हाँ, तो उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग था, ज्वेलरी डिजाइनिंग था. आई मीन आई वाज इंट्रिग्ड बाय द फैक्ट कि दीज किड्स यूज्ड टू क्रिएट जेमस्टोन ऑन द पीस ऑफ पेपर, लाइक यूज्ड टू लुक 3D, हुँ, यू नो. हुँ, तो आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे को भी सीखना है, ये कैसे करते हैं. तो वो कुछ हुँ, कोर्सेज चले. बाय द टाइम आई रियलाइज्ड कि नो, आई मीन पहले मुझे ये था कि आई शुड कीप ऑन डूइंग और परसुइंग द वे आई एम. क्योंकि एट द एज ऑफ 7 इट वाज माय फर्स्ट एग्जीबिशन इन जयपुर. कि नहीं, हमारे अच्छा, नानी के ही कोई जानकार थे, उनके पास एरिया था, तो उन्होंने वहीं लगा दी थी. और तब से हुँ, लेके स्कूल लाइफ तक यही चला. तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आई एम नॉट वर्किंग. आई मीन आई वॉज कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग ऑल द टाइम. मेरा काम सिर्फ क्रिएशन का था, बाकी सब नानी माँ देख लेती थी कि भाई कैसे है क्या हुँ, है. बिकॉज एज अ टीचर शी हैज ऑलवेज टॉट मी हुँ, हुँ, टू कीप डूइंग. उन्होंने हुँ, परफेक्शन की कोई बात नहीं कही. उन्होंने ये नहीं कहा हुँ, कि यू हैव टू बी अ परफेक्ट आर्टिस्ट. देयर इज नो बडी परफेक्ट एवर. हुँ, There is हुँ, there is abstractism to the point of higher consciousness. That's all. It is all हुँ, हुँ, abstract, a field of energy above and beyond. That's all. So all हुँ, she said हुँ, was that I should just keep on creating. तू बस बना बेटा, बस. हुँ, और मैंने वही करा बाकी मैं सारी देखूँगी। जिंदगी. एज हाँ, मतलब I never did plan in my head that I had to go to a art college or हुँ, will there be an art college, because जिस टाइप की मेरी एकेडमिक्स रही, आई वॉज ओके स्टूडेंट इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स. आप पेंटिंग के हुँ, अंदर आप और आप गेम्स में बात करो, आई एम गुड एट इट, आई एक्सेल. हुँ, बट हुँ, द रीजन वाई आई कुड नॉट understand, or maybe not, I wouldn't say understand, I was able to understand what they are teaching. The reason, my question was, why am I learning about human evolution like this? I'm a person who would rather say peace is the solution for everything. आराम से बात कर लेते हैं. इतना इतना इतनी उत्तेजना या फिर इतना इतना मनोरंजन जो आप करते हैं अंदर, जिससे आपका खून भी जले और मन भी आपका उथल पुथल हो जाए, और फिर आने वाले कई घंटों तक आप अपने आप को ऐसे सोचें कि ये क्या हो गया. वहां तक ले जाने से अच्छा है शांति से बात कर लो. तो आई यूज टू रीड अबाउट पानीपत की लड़ाई. वी अच्छा आर जी। फाइटिंग ऑन फॉर लैंड्स. वाई हुँ, why हुँ, can why can the human race or mankind or हुँ, human beings coexist peacefully? हुँ, मेरा क्वेश्चन ये होता था. तो ऐसा नहीं है कि मुझे, मैं लिख नहीं सकता कि वो क्या पढ़ा रहे हैं. मेरा हुँ, क्वेश्चन ही डिफरेंट है. मैं, ये क्यों हुँ, है, हम ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं कि हमने कैसे इवॉल्व किया, हम क्या क्या नई हुँ, चीजें सीखे, हमने कैसे नई चीजें हुँ, को दिमाग से जाती जिंदगियों में लाए, या कोई भी चीज. बिकॉज एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट इज द क्रिएशन ऑफ दिस. वो हुँ, अलग बात है, आपके हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, आप काम करते हैं, लेकिन वो यहाँ से ही चलता है सारा. तो सीपीयू हाँ, ट्रू। को थोड़ी सी हुँ, महत्वता दीजिए. हुँ, हुँ, Instead of saying the software is good, the software is good only because your CPU is making it very well. Yeah? So if this is intact, then everything is intact, I believe. So थोड़े से क्वेश्चंस को लेके मेरी एक वो रहती थी. एंड ऑनेस्टली आई वाज ऑन दैट लेवल ऑफ being in that school that uh,
आई वॉज टॉट कि आप जो हुँ, किताब में लिखा है उसको पढ़ लीजिए और फिर जी, जी, अपने उसको शब्दों में रिप्रोड्यूस लिखिए। करिए। हुँ, आई मीन मुझसे एग्जैक्ट सेम कॉपी तो नहीं होगा, ये हुँ, मेरे से होता नहीं, पर्सनली भी नहीं होता, और ना ही मैंने कभी, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। मुझे कई बार मैं अपने हुँ, आप को ये कहता हूँ भाई मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ कि सेम टू सेम कॉपी कर दूं। ये तो हुँ, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग तरीके से जा रही है और जो वो हुँ, कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। तो आई डोंट वांट टू हुँ, कॉन्ट्रोडिक्ट माई सेल्फ ओनली कि हुँ, ये चीज ऐसे नहीं होती। ठीक है, बट हुँ, इन द लेटर years आई was गुड, आई took biology and chemistry and physics. I was more हुँ, drawn towards science because of mom. हुँ, My mother is a surgeon. Yeah, so my mother being a surgeon, having a noble profession of healing people or giving life, उन्होंने भी एक कई चीजों को मस्तिष्क के साथ ही जोड़ा है। जैसे शी इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड रादर से कि नहीं, अच्छा जहां जरूरी है वहां तो आपको डेफिनेटली, सर्जन है तो काम अपना करना ही पड़ेगा, लेकिन जहां जरूरत नहीं होती वहां सिर्फ बातों से ही वो उस इंसान को ठीक कर देती है। तो उन्होंने भी यही कहा कि ज्यादातर तकलीफों का कारण और कुछ नहीं, आपकी सोच है। सोच है। उस बिकॉज जैसे आई हैव सीन पीपल कमिंग विद लाइपोमा, इट्स स्मॉल ऐसे नोड्यूल सा बन जाता है, एंड हुँ, उनके आसपास में कहीं कोई कहते कि सर ये कैंसरस हो सकता है। बस ये एक सोच है, हो सकता है उसका कोई काम ना हो, वो सिर्फ एक हल्का सा होगा, निकल जाएगा, बट उसको सोचते हुँ, रहने से वो नहीं होने वाली चीज भी हो जाती। हुँ, तो हुँ, आई हैव बीन इन दैट जोन वेयर लर्निंग वाज इन अ वेरी डिफरेंट वे, आई वाज टॉट। हुँ, हुँ, तो एंड शुरुआत के दिनों में माय नानी बीइंग एन आर्य समाजी, हुँ, तो घर में यज्ञ बहुत होता था, एंड आई बिलीव हर घर में यज्ञ होना चाहिए। आप शुरुआत एक हफ्ते में एक बार तो करें, जो भी दिन आपको शुभ लगता है अपने लिए, उस हिसाब से शुरू तो हुँ, करें। उस एक्चुअली क्या होता है जब यज्ञ होता है, तो जब मंत्रों का उच्चारण होता है, तो द काइंड ऑफ साउंड एंड वेव्स विच इज क्रिएटेड विद इन आवर bodies, with the voice हुँ, going within yourself and outside, everything just becomes a paradise. आई मीन जो चीजें ब्लॉकेजेस होती हैं जिनको आप कहते हैं, जिनके लिए हम कई चीजों के लिए कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, वो चीजें ऑटोमेटिकली हील आउट हो जाती हैं। और हुँ, वातावरण की एक शुद्धि भी होती है, बिकॉज उसमें जो जो सामग्री लगती है उससे एक्चुअली वातावरण शुद्ध हो जाता है। एंड इट इज हुँ, नॉट जस्ट द पॉल्यूशन आउटसाइड, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेज एज वेल, जो हुँ, आजकल हो रही हैं बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ फोन एंड इंटरनेट। मैं ये हुँ, नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी इज नॉट गुड, बट हुँ, टेक्नोलॉजी इज क्रिएटिंग अ बैरियर समवेयर, हुँ, जो दिख नहीं रहा है पर है। हुँ, आई मीन आप वी कराते नीड हैं टू बी। यज्ञ? हाँ मैम, जयपुर में आज भी माय वाइफ इज अ लेक्चरर ऑफ संस्कृत, यू नो। ओह! लवली। तो हाँ, पहले नानी करती थी, फिर थोड़ा मम्मी और मैं करते थे, तो आज हुँ, मैं और नेहा करते हैं, her नेम इज नेहा। हुँ, तो हुँ, मैं और नेहा आजकल करते हैं, तो बच्चे भी बैठ जाते हैं, एंड आई वुड वांट देम टू हुँ, take this vibration and हुँ, grow it as a legacy, हुँ, because it is the best vibrational energy I have endured throughout my life. हुँ, I mean, we we intend to focus on our careers with a lot of degrees and certificates, and we are being felicitated as everything in our lives. What we fail to realize is that this vibrational energy of just Om, which is actually the sound of the planet as well. वो सिर्फ हुँ, AUM है, हम ओम बोलेंगे, हुँ, but the vibrational energy will, what is more important, I mean, go higher or be in a very constructive zone of living. हुँ, I mean, I'm not saying people जिनके पास डिग्रीज हैं वो सही नहीं है या मैं सही हूं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इनके परे भी एक दुनिया है जहां हमें जाना है एज हुँ, ह्यूमन बींग्स। आई मीन हम, हुँ, बिकॉज आई हैव बीन वेरी फैसिनेटेड किड with lot of things. हुँ, It comes to my
I mean, I believe that no matter I was not a good student, as in not getting good grades or anything, but I had the fascination of learning. I still have the Hmm. fascination for learning. I mean, Hmm. हो सकता है कि मुझे आपसे कई चीजें सीखने को मिले जो Hmm. शायद कोई और नहीं सिखा पाएगा इस दुनिया में. I mean, Hmm. that is the kind of approach I have throughout life. Hmm. And I have Hmm. learned from the smallest and the most, जो सबसे अणु भी होगा, सबसे छोटा, Hmm. Hmm. जिसकी एग्जिस्टेंस भी आपकी नेकेड आई से नहीं देख सकती, वो भी कहीं ना कुछ सिखाई जाता है. All you वो have to कहते just हैं ना, do इफ is, बी ओपन टू इट. yeah, correct. You have to be open to everything, to yourself again. या. So स्कूलिंग के बाद डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आया दैट ठीक है, मेरे आसपास वाले जो थे, मम्मी, वो इतना, मॉम ने कभी इतना ये नहीं कहा कि तुम्हें डिग्री लेने की जरूरत है. अच्छा. बट एक हाँ, ये जरूर होता है कि हम ये कहते हैं कि नहीं, इसलिए हम ये कर लेते हैं. इससे हम्म. मैंने कभी, आई नेवर फेल्ट लाइक गोइंग टू कॉलेज फॉर द फैक्ट दैट आई गेट अ सर्टिफिकेट. फॉर मी कॉलेज वाज मोर ऑफ अ लर्निंग ग्राउंड. हम्म. आई नेवर वाज fascinated about कि आप मुझे बाद में डिग्री सर्टिफिकेट देंगे या मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो उसके बाद मेरे को कुछ सर्टिफिकेट नहीं. मेरे को पीएचडी इसलिए नहीं करना है कि मैं मेरे को सर्टिफिकेट दिखाना है. हम्म. वो लर्निंग बहुत अच्छी है. आई मीन जो हम्म. थ्योरेटिकल पार्ट है टुवर्ड्स आर्ट, दैट हम्म. इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ आर्ट ऑल्सो. आई मीन कितना कुछ है उसमें. द हम्म. आर्टिस्ट के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, उनकी जिंदगी के बारे में हम्म. पढ़ने को मिलता है, कैसे उन्होंने अपने हम्म. मिस्टेक्स करी लाइफ के अंदर, वो पढ़ने को मिलता है. हम्म. बट उनको पढ़ो, समझो. हम्म. हम्म. बट जो भी चीज आप अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट कर रहे हो एज एन आर्टिस्ट और एज हम्म. a total human being you are creating. I mean, या. I just resonate with this concept of being a total human being, which is the most articulative way of living in life. I हम्म. mean, it is not just creation of pains. It is a हम्म. creation of sometimes. I mean, ऐसा होना चाहिए कि आप, if you're sitting, if you're talking, if you're looking, everything is artistic. That is the kind of approach I have in life. And जितना मैं इस कॉन्सेप्ट का अलग अलग तरीके से वर्णन पढ़ता हूँ कहीं ना कहीं, इट हम्म. फील्स वेरी इट फील्स वेरी profounding, to be born as a human being. या. सो Right? आप अभी, I mean, आई एम कंपेल्ड टू आस्क यू, do you follow any mhm, spiritual guru? Do you yeah. participate in any workshops? What's your take on that? What's your take on Uh, spiritualism? uh, Because you're I, talking a lot I of spiritualism. actually this is something that I live with. I would rather say, uh, spirit. हम spiritualism की बात कर रहे हैं, and we have a spirit within ourselves. हम्म. You see, I मतलब आपने believe in कहीं the से सीखा? feeling that जब हम किसी से ये कहते हैं ना, मेरे ख्याल से अगर आपका बचपन से ही अगर आप ये अपने अंदर ये रख लेते हैं दिमाग में कि मुझे क्या करना है, यू हैव अ क्लैरिटी, यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड यू आर बीइंग ब्रॉट अप with such clear-headed souls and females and people around you, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आता है. एंड ये कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर है. हम्म. बट जीवन, मेरे ख्याल से हर किसी का एक अलग तरीका है जीवन जीने का. तो वो कई चीजें जो पहले हो जानी चाहिए वो बाद में होती हैं. मेरी हम्म. पहले शुरुआत हो गई थी इन चीजों में. तो एज एन हम्म. एट द एज ऑफ 7 व्हेन आई पुट अप माय फर्स्ट एग्जीबिशन, उस टाइम मैंने क्लियर कर लिया था यही करूंगा जिंदगी भर तक. तो हम्म. मेरे ऐसे प्लान्स थे ही नहीं लाइफ में कि मेरे को 12th के बाद मेरे को मेडिकल के एग्जाम्स देने, या आई हैव टू लुक इन फॉर एनी थिएटर ग्रुप टू बी एन एक्टर. नथिंग. आई वाज वेरी क्लियर. तब तक मैं इतना स्ट्रांग बेस बना चुका था कि आई कैन take care of myself throughout because I have not asked financial help from my parents ever. And I believe as a son, it is more of, uh, it is like
I am thankful already, you know, for giving me life. Hmm. I mean, not just me breathing and living, but the way my thought process is. Hmm. And also, the life teaches you a lot. अगर आप Hmm. लिटरली रुक के अपने आप का कॉन्टेम्पलेट करें, खुद को देखें, इंट्रोस्पेक्टिंग करें, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी. इसके लिए Hmm. स्पिरिचुअल गुरुज जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं. दे आर Hmm. इंट्रोस्पेक्टिंग देमसेल्व्स. Hmm. इंस्टेड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन आप उनकी बात फॉलो कर रहे Hmm. हो. आप इंट्रोस्पेक्शन Yeah. करना शुरू कर दो, Hmm. तो आप वहीं पहुंच Go जाओगे जो वो कह inwards. रहे हैं. You mean go inwards? सो स्पिरिचुअल गुरुज मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में. Hmm. यस मैम. I तो said going जैसे inwards. स्पिरिचुअल गुरु अगर कोई मैं कहूंगा तो गोइंग इनवर्ड्स करेक्ट. बिकॉज देर इज अ होल यूनिवर्स. यू सी, Hmm. मैं कई बार ये सोचता हूँ कि यहाँ पे अगर एक सेल होगा, रेड Hmm. ब्लड सेल, वो जा रहा होगा, यहाँ से जाएगा पूरा यहाँ तक, थकेगा भी, थोड़ी देर रुकेगा, हो भाई बहुत दूर हो गए, फिर यहाँ से पूरा नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा. आई मीन इट्स अ जर्नी. Hmm. आई एम I have a living universe within myself. If this so-called thing or this line doesn't, ये आपके रोंगटे खड़े नहीं कर दें और आप खुश हो जाओ अंदर से. I mean, what else is there in life then? Yeah. And स्पिरिचुअल गुरु की जो आप बात कर रहे हो, उसके लिए आई वुड रादर से मेरी नानी माँ की छोटी सिस्टर थी, उर्मिला. उर्मिला Hmm. राजोत्या. Uh-huh. She was more into meditation, spirituality, Hmm. but not towards anything structured. You Hmm. see, भगवान खुद कहते हैं मैं निराकार हूँ. Hmm. आकार कौन देते हैं, क्यों देते हैं? Hmm. बट ठीक है, आई मीन ये अपनी अपनी एक श्रद्धा की बात है, एंड आई लव इट ऑल्सो बिकॉज मैंने खुद भी उस स्ट्रक्चर को बहुत पसंद किया है. I love it. As a person, I just love him. All the gods, I mean, all the people who pray to n number of dignities. I love everyone. I don't have any. I'm not biased towards anything. I Hmm. mean, re- until unless we are not religious, Hmm. spirituality is just around the corner. Hmm. Yeah. और कई Until or बार unless एक. you're not. हाँ जी बोलिए. So sorry, ma'am. आप ही बोलें. नहीं नहीं. I said until or अच्छा. unless we are not dogmatic about any particular thing that this is what you have to do. This is या what या या. what you must follow. हम्म. Everything is fine. Yeah, I mean, we should enjoy. I mean, मैं एक particular. It is not a ritual. I just love doing it. I get up in the morning, bare feet on the ground. I thank the earth. Thank you for this new day. I haven't seen many people do that. I would love people to do that. Uh, Hmm. Not follow it, but just do it for one or two times. You'll feel the difference. The way earth speaks through the skin, through the membrane, throughout the energetic circuit is beautiful beyond belief. कुछ चीजें हम नहीं कर रहे हैं as human beings. We were actually, as God says, I created you in my own image. Definitely, He might be Yeah. having all the qualities which He Hmm. has. We have, you know. It's just we aren't exploring ourselves towards the inner Hmm. self and the outer self also. So Hmm. वहां पहुंच ही नहीं रहे हैं. And I Hmm. guess art is one medium. Maybe Hmm. painting is one medium which connects you to the higher consciousness. It connects you to yourself. Uh, it brings a breath of fresh air in the perspective of living. I guess that is what I would say. Okay. Now we come to we'll come to your, I'll ask you a little bit more about this towards the end, but now we'll Wow. talk about the Varanam, that the exhibition that you're having. Just tell us more about it. Uh,
Sarvam is basically the cosmic energy that resides between all the living and the non-living. I mean, हम ये कहते हैं कि if there is something which is non-living, it has a Hmm. vibrational energy. You're not able to see it is not, it is just okay. But there is. Everything is Hmm. vibrating at their own Yeah. pace and own time, own speed. And Yeah. so Sarvam is basically the cosmic energy which is within myself, Hmm. the way I see life and the way life has been, giving me the enlightenment to Hmm. love or being uh, in the bubble maybe or in the universe of love. Hmm. This energy of love is, I mean, not the way everything works around love. I mean, जैसे Hmm. हम usually कहते हैं कि love has a हम red heart is denoted by love. It is Hmm. green basically because I believe it should be green. Heart chakra is Hmm. associated somewhere with the heart, so it has to be green. This is Hmm. my perception, and it Hmm. feels so light within myself when I say it. Hmm. I mean, red is basically root or sacral. Hmm. I mean, you see, I believe that कई colors associate सही तरीके से नहीं हो पाते हैं. And there is Hmm. so much information around, Hmm. that we are not able to just put certain things there. So this exhibition is all about that depth within every human soul. Hmm. जैसे as a single kid, I never felt alone. Okay. उसका रीजन ये था मेरी नानी हमेशा कहती तेरे अंदर एक अंतरात्मा है. अच्छा. ठीक है, तो इसको इस तरीके से मैं समझ पाया मेरे अंदर एक और कोई है और मैं खुद भी Hmm. हूँ. मेरी बॉडी भी है. आई मीन अ Hmm. कॉन्सेप्ट विच आई वुड से कि ये बहुत लेटर ईयर्स के अंदर आप समझ पाते हो. बट ये चीज मुझे पहले ही समझ में आ गई थी कि अच्छा आई एम Hmm. टू पीपल इन वन वन बॉडी. सो हाउ एम आई Hmm. अलोन. यू नो Hmm. आई कैन टॉक विद इन Hmm. माई सेल्फ और Hmm. आई डू आई स्टिल हैव दैट. I do sit with myself while I'm creating or Hmm. just Hmm. sitting quietly to talk to myself. Okay. It is good to talk to yourself. How many times do you even talk to yourself? We are Hmm. talking about हम सबसे बात करते हैं हम खुद से नहीं बात करते. Hmm. So, Take me through your artistic process. Like when you paint, actually, you decide on painting something, you pick up a. How do you go about it? Like you take a blank canvas and then you do whatever comes to your mind, to your heart, or you think uh, about it see beforehand and then go about it. see the process of my creation takes years sometimes. There have been in this exhibition itself there are paintings that have taken me a decade. Really? Yeah, I mean, there are artworks that the inception of them Mm. happened way back, but Okay. the kind of thought process I had evolved throughout life Mm. till the Mhm. time I could just bring it on canvas. So it's a very, very long process. I mean, usually people would rather say colors हैं Mm. सिर्फ flow कर रहे हैं. It Mm. takes me time. It takes me really, really hard time to put something there because it is not something that I am planning कि मैं इसके अंदर रेड Mm. डालूंगा या मैं इसमें ब्लू डालूंगा. Mhm. मेरा कॉन्शियस लेवल उस लेवल पे है कि जहां पे मेरे को अपने आप से मैं समझ पाया हूं कि मैं यहाँ सोचूंगा लेकिन ये मेरा हाथ क्या करेगा वो यही जानता है. आई मीन एट दिस वेरी मोमेंट ही इज अ सिंगल बीइंग हिमसेल्फ. एज अ Mm. किड आई एम intrigued by what he is doing but just by looking at it. And sometimes the creation comes in a way where even I am speechless. There have been moments. I mean, it has always happens that Mhm. मैं अपनी पेंटिंग कर रहा हूँ और आई Mhm. हैव टीयर्स.
Something Hmm. opens up within myself. A part of me is there in every artwork I do. And definitely there are paintings, जैसे अगर हम कोई भी एक पेंटिंग की हम बात करते हैं, प्रॉमिस ऑफ अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड की मैं बात करता हूँ. Hmm. It took me almost 7 to 8 years after I thought, what is a promise of a beautiful world? You keep on going through a lot of uh, incidences or moments in your Hmm. life that one day it comes on canvas. ये प्रोसेस ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ लिखूंगा और फिर वो होगा. मैंने एक चीज के बारे में सोचा और मैं फिर अपनी जिंदगी के साथ उसको कोरिलेट करके औरों की जिंदगियों को देखते हुए अपने आप वो चीज इवॉल्व होती है, जैसे एक बच्चा होता है जो बड़ा हो रहा होता है. सो every painting right now which is exhibited is alive. They are still evolving. I believe the paints also look at the viewer. वो भी तो देख Hmm. के खुश होते हैं, वाओ ये कितना खूबसूरत है, वाओ इसमें देख कितना अच्छा है. आई मीन एक पिंक कलर जो कैनवस पे लगा है वो एक ह्यूमन बीइंग को देखे आएगा, जो बहुत कोई फीमेल आए जिन्होंने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हो, बहुत रंगीन पोशाक हो, तो ऑब्वियस सी बात है कैनवस खुश नहीं होगा. मैं नॉन लिविंग एनर्जी की बात कर रहा हूँ, कॉस्मिक एनर्जी विच Hmm. इज अलाइव Yeah. विद इन दैट, वो भी खुश हो रहा है. सो Hmm. ऑल यू सी when you enter, and everyone who will, is the, Hmm. it's not just abstract, Hmm. you know it is Hmm. it is a soulful expression of how life is, within, beyond, wherever you can take it. Hmm. Your through your paintings, you also said that everything is interconnected. The entire universe is Yeah, interconnected. correct. Huh? I mean, I Tell us believe in more that. about that. I believe in that thing that everything is energy. Hmm. Every simple thing is energy. ये इसके Hmm. पीछे ये चीज मैंने स्कूल से सीखी. ये साइंस की Hmm. किताब में है, फोर्थ स्टैंडर्ड के अंदर आपको पढ़ा देते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वी डोंट सी इट. वो सिर्फ Hmm. हम मार्क्स पाने के लिए पढ़ लेते हैं. उसको देखो और उसको फॉलो Hmm. थ्रू करो. इट इज Hmm. एक्चुअली द ट्रूथ ऑफ लाइफ. Hmm. एवरीथिंग इज एनर्जी. और आई हैव बीन इन द फेज ऑफ, और बीइंग इन मेडिटेशन, जब Hmm. सिर्फ ऊपर एक पंखा चल रहा था जो कच 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 करता है. वो कई बार जब कच कच कर रहा होता है तो आप उस कच कच को अगर ध्यान से सुनो, उसमें एक वाइब्रेशन एनर्जी होती है विच इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द ओम, एंड इट Okay. ट्रांसेंड्स यू टू that zone. So I have gone through these physical and experiences throughout my life to understand life. Maybe because I was looking at life in a very different perspective. Hmm. Hmm. I mean, there is more to myself. Hmm. Hmm. That that's what I feel. Yeah. You also said that, although that is true also, but I want your take on that. That every one of each living being here on the earth has a part to heal itself. Yeah, we are healing itself. Uh, uh, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे खड़ी हैं और बाई चांस आपके कट लग जाता है. बाय द टाइम आप पहली बार दूसरी बार वाइप करेंगी, उसको धोएंगी, वो हील हो चुका होता है अपने आप ही. हम मैं वही कह रहा हूँ, ह्यूमन आई कैन एक्चुअली सी what is happening only if we are able to touch our skin and feel it कि ये हो रहा है. And healing is, everybody is healing itself. बस फर्क जहां मुझे जो आजकल लगता है वो ये है कि बिकॉज इंटरनेट और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हर जगह हो गई है, बिकॉज ऑफ a lot of pollution of a lot of things, तो हम उस जोन आउट नहीं हो पा रहे. इट इज समथिंग लाइक आपके ऑराज ऊपर नीचे
हुए हुए हैं सबके, मेरे भी हो जाते हैं कई बार। चक्रास तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे चक्रास पूरे अलाइंड है। एवरी थॉट प्रोसेस विल चेंज द चक्रास एनी डे, एवरी सेकंड इट चेंजेस। इट इज हाउ Hmm. यू परसीव सर्टन थिंग्स दैट कीप इट अलाइंड। इट इज ऑल अबाउट दैट। और लोग जो चक्रा हीलिंग करा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो तो हर सेकंड चेंज हो रहा है। Hmm. अभी आप खुश थे तो उसके अंदर डिफरेंट होगा, अब आप जैसे सैड हो गए चक्रा हीलिंग की, तो। एक सेकंड, चक्रा हीलिंग की आप बात कर रहे हैं, डू यू बिलीव जी, इन दैट कि या आई एनीबॉडी डू, एल्स आई कैन डू। डू? नो नो नो, एनीबॉडी एल्स कैन डू द हीलिंग फॉर यू? देर आर पीपल हु डू हीलिंग, जैसे आई डू आई यू हैव आई पर्सनली हैव बिलीव? that डू somebody यू else can पर्सनली heal बिलीव? you. हाँ, दैट um स्पिरिचुअली, I mean, नॉट हम द खुद को तो फिजिकल ठीक, बॉडी। या स्पिरिचुअली वी डू। दिस इज एन एवोल्यूशन प्रोसेस। इसके अंदर मैं इसको इस तरीके से नहीं ले रहा, मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि अगर हम अर्थ को भी एक बीइंग मान लें, तो वो कॉन्स्टेंटली मुझे हील कर रही है विद द काइंड ऑफ ऑक्सीजन इट इज गिविंग। तो हम एक सिग्निफिकेंट ना बनाएं किसी चीज को कि हम ऐसे करते हैं क्या, क्योंकि ये तो हो ही रहा है, ये तो कॉन्स्टेंटली हो रहा है, ये कहाँ नहीं हो रहा। कई बार ऐसा क्यों होता है कि आप सुबह उठे और वो हवा का झोंका चला, एंड इट brings something within you which no spiritual thing was able to heal you, और any किसी बीमारी से आप हील नहीं हो पा रहे थे। इस नेचर विल ऑलवेज टीच यू और गिव यू द ब्लेसिंग देयर एंड देन। जो कई बार मैंने कई कई बार लोगों से ये सुना कि आपके जो आप कुछ ऐसा कर दें लाइफ के अंदर जिसके अंदर आपको कर्मा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि कर्मा के लिए आपको आपकी उम्र पूरी लगेगी और उसके बाद भगवान जी बोलेंगे कि भाई तेरी उम्र हो गई अब तू ये ले। वो उसी टाइम पे आपको उस तरीके से कर देंगे कि वो एंड में जाते जाते आप बोलोगे हो गया मेरा हैप्पी बर्थडे। यू नो, इट इज ऑलवेज क्विक। आई मीन, वो जो कई बार मैंने पर्सनली ये महसूस करा भी है और देखा भी है पर्सनली, कि जब आप बाय चांस हम कुछ कुछ भी ऐसा हो जाए, हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए विच इज नॉट हायर वाइब्रेशनल एनर्जी और अ लोअर फ्रीक्वेंसी, गॉड जस्ट हिट्स यू राइट इन देयर। दिस इज नॉट यू, दिस इज नॉट एट ऑल यू, दिस इज नॉट हाउ यू फंक्शन। उसका नतीजा कुछ ऐसा होता है कि बाय चांस आपकी टेबल से ठोकर लग गई, आपकी घुटना, हाथ का घुटना जो है वो दीवार से अड़ गया, और फिर आप ठंड में कर रहे हो। तो ये होता है। दिस इज समथिंग दैट हैपेंस इंस्टेंट, डजंट टेक टाइम, यू विल टेक इट लॉन्ग बैक। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को समझ जाओ एंड यू कैन परसीव योर सेल्फ और मूव इन लाइफ विद दीज एक्सपीरियंसेस, थिंग्स बिकम बेटर। Yeah. Okay, Varunjay, tell me a day in your life. How do you begin your day, and how and when do you end it? You um, to your my mornings are, जब मैं दिल्ली में एग्जीबिशन के लिए आया था उससे पहले मेरी मॉर्निंग्स थोड़ी सी लेट हो रही थी, क्योंकि मैं रात भर काम कर रहा था, और रात मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आती है। इट्स साइलेंट। hmm, द लास्ट कोटेशन आई रोट was silence is the new voice. We are talking too much, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन है वर्ड्स का। आई मीन, थोड़ी देर रुको, शांत रहो, वाइब्रेशन के साथ बात करो। बिकॉज ये मैंने देखा है अपनी मॉम और डैड के बीच में, दे डोंट रिक्वायर वर्ड्स टू टॉक एट ऑल। वो आंखों में एक दूसरे के देखेंगे और काम हो जाता है, पीरियड। मैंने ऐसा रिश्ता नहीं देखा, वहां शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी। वाओ, वेरी इंट्रीगिंग, देख के खुशी होती है। वी हैव अ माउथ, and still these two things are so expressive. They can very well tell you whether the person is what and what। जरूरत ही नहीं पड़ती एक्सप्रेस करने के लिए कुछ। सो ये चीजें थोड़ा सा ज्यादा मेरे को
Hmm. टुवर्ड्स लाइफ लेके जाती हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड मॉर्निंग्स अब यूजुअली आफ्टर, जैसे नेहा ऑल्सो डज एक्सेस कॉन्शियसनेस, वी डू एक्सेस कॉन्शियसनेस हीलिंग. It's a hands-on, yeah, it's a hands-on process. With the, matlab, these are, जैसे there are certain things like body processes, and there is something like bars. Bars, Hmm. what it does is there are 32 points here, which are not Hmm. marked. Everyone has it. I have it. You have it. Everybody on the planet has it. Even the animals do have it. Hmm. And if these are uh, made to vibrate at a certain frequency, which you can call it the universal frequency of life, then Hmm. everything falls in place. I mean, जो आप कह रहे थे कि क्या हम किसी को हील कर सकते हैं, Hmm. माइंड बॉडी सोल तीनों चीजों को हील कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड होलिस्टिक हीलिंग एज पर. और Hmm. इसी 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 के ऊपर मैं लाइफ को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका. आई मीन, Hmm. व्हेन आई वाज इन कॉलेज, Hmm. मेरे को पता नहीं क्यों बहुत सीवियर हेडेक्स होने लग गए थे. Hmm. एंड इन लेटर years, almost of 15 years of having those headaches on a regular day basis, Hmm. I was diagnosed with cluster headaches, and a healer in Jaipur cured me through this process. Okay. I don't have headaches. I used to live a Hmm. life where I used to pray to the Almighty and the universe. एक दिन दे दो बस ये headaches खत्म कर दो. I swear to you, I am going to paint throughout. और कुछ मतलब ही नहीं. मुझे सिर्फ पेंट करने का था. Because ब्रश नहीं चलता था. I couldn't focus. So I have Hmm. seen that reality. If this Hmm. goes haywire, everything ends. Hmm. And this healing modality of access consciousness cured me through that stages. And ये जो healer हैं, uh, Hmm. इनके साथ भी लाइफ के अंदर काफी कुछ हुआ. जैसे उनको फाइब्रोमाइल्जिया था एंड शी हील्ड इट आउट, समथिंग विच नहीं होता, and she came Herself. out of it. Yeah, herself. Her name is Dr. Jyotika Gupta, and she is in Jaipur. And she's a very, very wonderful, very sweet person. Always enlightening the person, always motivating the person to. मतलब वो ये नहीं कहती कि तुम्हें क्या करना है, वो ये कहती हैं, "इन- हम एक अच्छे Hmm. इंसान बन जाएं, एक अच्छी अच्छी रेस बन जाएं, दैट इज ऑल द More प्लैनेट than enough. और द कॉस्मिक रिक्वायर्स, दैट्स ऑल." एंड Hmm. आई ट्रूली बिलीव इट ऑल्सो. एंड शुरुआत से ही मेरा नजरिया लाइफ को कुछ ऐसा ही है, Hmm. एंड वही मैंने पोर्ट्रे भी किया है अपनी पेंटिंग्स और आर्ट के थ्रू. तो सुबह का टाइम, आई बेसिकली जैसे ठीक है, अर्थ को थैंक यू कह दिया, फिर बाहर आए. तो आजकल ऑब्वियसली थोड़ा Hmm. ज्यादा ऐसा होता है, बिकॉज आई वॉज नॉट स्लीपिंग बिफोर आई केम. तो Okay. नेहा को सुबह सुबह उठ के शी डज द प्रेयर्स एंड ऑल, मंत्रों का उच्चारण, तो शी गेट्स अप एट 4. तो उसके बाद लाइफ इज वेरी ऑसम, यू नो Hmm. सो मच वाइब्रेशनल एनर्जी फ्रॉम, मतलब नेहा और मेरा रिश्ता कोई 28 साल का है. वी वर गुड फ्रेंड्स, एंड Hmm. एक टाइम पे आके इवन शी अंडरस्टूड एंड आई अंडरस्टूड कि वी मेड फॉर ईच अदर. It is better to be with the person who understands you, and can, I mean, she makes me feel I love being alive. You see, that is the whole thing I can think of. Hmm. Every moment is alive. तो वो सुबह उठती है, फिर वो अपने मतलब उनका चलता रहता है, तब तक बच्चों को फिर मैं उठाता हूँ, दोनों को स्कूल तैयार करता हूँ. आई लव डूइंग दैट. Hmm. फटाफट नहाओ, तैयार करो, ये सब. आई टेक देम द स्कूल, ब्रिंग देम बैक एज ए नॉर्मल पर्सन. रास्ते में कहीं ब्रेड लेनी है, कहीं कुछ लेना है, तो वो लेते हुए आएंगे. यू नो एंड Hmm. उसके बाद, यस, देयर कम्स अ टाइम व्हेन माय मदर गोज टू द हॉस्पिटल. शी स्टिल वर्क्स. Hmm. शी Okay. लव्स द जॉब of Hmm. creating that nobleness, or maybe
वो एक उनका एक ये होता है कि यार जिंदगी बचाना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट। हम्म, मैं ये नहीं कर सकती, मतलब मेरे से मतलब ठीक है मॉम की रिटायरमेंट की एज है, बट हम्म, शी डजंट टेक इट दैट वे। आई मीन शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल्स आफ्टर माय ग्रैंडमदर एंड माय मासी एंड ऑल द फीमेल्स इन माय लाइफ, हम्म, who understands life in a very good way. She's been a rally driver also. तो okay. आई मीन उनकी ड्राइविंग स्किल्स ऑसम है। आई मीन अच्छा। शी इज वन पर्सन जिसने वॉल्वो बस, जो हम जाते हैं दिल्ली जयपुर, एंड मैं वो पीछे से वॉल्वो चली गई, मैंने कहा इसको थोड़ा साइड करके आगे निकल लें क्या पर, हम्म, एंड वी वर ड्राइविंग अ मटीज, आई अच्छा। कुड आई द बस नेवर क्रॉस्ड अस अगेन, अच्छा। यू नो। एंड इट वाज नॉट दैट शी वाज ड्राइविंग रैश, वो 100 की हम्म, स्पीड पे चलती रही निरंतर। हम्म, तो सिर्फ उस, और हम लोग सब 100 की स्पीड पे ही चलते हैं बिकॉज उस पे एवरेज भी बहुत अच्छा आता है। और हम्म, बाइक हो या कार हो, वो थोड़े हम्म, से दे आर देन लिविंग, यू नो, देन यू नॉट, जैसे हम अपने ब्रेन्स को ओवर थिंकिंग करते हैं वैसे ही हम गाड़ी को रैशली चलाते हैं। ये हम्म, कुछ एक जैसी वाइब्रेशनल एनर्जी है जो मैं फिगर आउट कर पाया व्हाइल आई वाज क्रिएटिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। वो एक हम्म, जैसा ही है कुछ कुछ। आप जैसे ओवर थिंक करोगे वैसे ही आपकी गाड़ी भी चल जाती है कई बार। So instead of हम्म, driving rash, she told me to look at the beauty of life. You know, हम्म, जब जैसे हम जब छोटे थे तो मम्मी पापा बाहर लेके जाते हैं, हम जैसे मैं भी आज अपनी डॉटर्स को, तो हम धीरे धीरे गाड़ी चलाता हूँ मैं कहा देख वो हम्म, देख गाय, वो मैंने कहा रास्ते। वो देख चील हाँ। उड़ रही है। यू नो हम लोग का हम्म, ये रहता है, ओ पापा वो देखो गाय। हम्म, मैं कहा हाँ गाय गाय गाय। हम्म, तो हम्म, ये पूरा दिन जब तक वो स्कूल से वापस आती हैं तब हम्म, तक आई मॉम goes to the hospital and everything. So I हम्म, then go to my studio and I sit there for hours. Hours. Uh, I believe that time can be expanded and contracted, as I just said पहले। कभी 24 छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं, तो अगर आप वो 1 मिनट को भी एक्सपैंड कर दो, जो हम्म, पॉसिबल होता है, then तो you have ample amount of time of creation. हम्म, You know? How जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, इतना वाइब्रेट करने की। All you have to go is still. सो वो फिर हम्म, सारा दिन पेंटिंग में निकलेगा, क्रिएटिव क्रिएशन प्रोसेस चलता रहता है। और स्टूडियो के बीच के अंदर नेहा आ जाती है, मॉम आ जाते हैं, आई हैव पेट्स हम्म, तो वो भी आ जाते हैं, एंड हम्म, ऑल आई एम वेरी बहुत अच्छा सा एक समन्वय सा बन जाता है, एक जिसके अंदर एवरीबडी इज को एग्जिस्टिंग। मतलब माई डॉटर्स कम दे विल, मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं उसी ब्रश को यूज करके कुछ भी बना के चली जाएगी, एंड आई लव इट व्हेन शी डज दैट। आई ओके। मीन मुझे खुशी है कि आप आए मेरे कैनवस पे कुछ बनाए, एंड देन आई विल क्रिएट इट आफ्टर हम्म, यू हैव फिनिश्ड, या फिर उसको और हम्म, इवॉल्व करना हो तो, बिकॉज द मोमेंट दैट ब्रश विद लोडेड विद इमोशंस फीलिंग्स पेंट, हम्म, जब वो जाता है कैनवस पे समथिंग हैपेंस। हम्म, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्टॉप हम्म, एंड फील, एंड हम्म, एवरीथिंग विल, आई मीन बीइंग स्पीचलेस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई गेस। सिर्फ फील ही कर लो ना। आई मीन उसको यहाँ अंडरस्टैंडिंग भी क्यों करनी होती है, कई बार मैं ये भी सोचता हूँ इतना अंडरस्टैंड भी क्यों करना है। आप फील तो करो, अब फीलिंग में ही काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो आपकी बॉडी को चाहिए वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको अपना हर जगह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देर आर सर्टन, आई मीन अंडरस्टैंडिंग लाइफ, लिव इट। नो, व्हाई अंडरस्टैंड लाइफ, जस्ट लेट्स लिव इट। ऊपर वाले ने बना के भेजा है, लेट्स लिव इट टू द मैक्सिमम दैट ही फील्स ब्लेस्ड कि थैंक गॉड आई हैव क्रिएटेड यू। हम्म, So that is how the entire day goes. Then हम्म, I do healing, जैसे मैं और नेहा एक हम्म, दूसरे को हील करते रहते हैं। We run ओके। bars throughout the week and we do body processes, give body processes। तो body process कुछ नहीं होता है उसमें, आपको थाइमस पे और यहाँ पे या फिर जो भी उसके अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं वहां पे आपको रन करनी होती है एनर्जीज।
जो सबके अंदर है। अगर हम ये कहते हैं कि आप 3 टाइम खाना खाते हो, तो आप सोचो कितने जूल्स ऑफ एनर्जी आपके अंदर जा रही है, जो हम्म ऐसे ही पड़ी है, जिसका आप कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे। या तो वो आपके कोई काम आ गई तो ठीक, नहीं आती है तो आप उसको हम्म अर्थ को दे दें प्लीज। हम्म उसके लिए कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू स्टैंड विद इन एज बेयर फीट ऑन अर्थ, एंड you say that I give all the excessive energy which I have of beauty and everything, whatever you feel positive about, and you just आप उसको अर्पण कर दें। इससे ज्यादा बेहतर उसके बाद जो धरती खुश होती है ना, वो बहुत खूबसूरत लम्हा भी होता है, और एक मोमेंट हर तरीके से हो जाता है। I mean, it is not just for आपने yourself, it is for the entire good of the entire world, because वो कॉस्मोस। एक जगह एनर्जी होगी, एंड दो हम्म that same energy will be transmuted in different beings, and everybody is going to feel it. हम्म हम्म। आपने क्या कोई मोडालिटीज, डिड यू लर्न सम मोडालिटीज लाइक एक्सेस बार आप आई बोल रहे हैं? जैसे मैंने एक्सेस कॉन्शियसनेस हीलिंग के अंदर काफी कुछ पढ़ा है। चक्रा हीलिंग भी मैंने सीखी है, एंड स्विच वर्ड्स हो गए। उसके अलावा आई ऑल्सो डू साउंड हीलिंग। I mean, I do play a lot of instruments, so हम्म playing certain instrument at a particular frequency creates a lot of harmony within the mind, body, and soul. हम्म। I mean, जैसे अगर आप हाँ जी मैम। आई सेड यू डू दैट आल्सो, साउंड हीलिंग? I do that also. I do that also. Yeah. But ओके। जैसे sometimes I have realized that now, after with all हम्म these modalities, when you keep on healing yourself, uh, हम्म and it is not, I don't take it as if every person is broken, कि आपको heal करने की जरूरत है। No, you just have to heal yourself so that um, एक I mean, healing for me is like the extra खाद you put in the tree so that the roots become alive and it can grow and bloom. अगर हम्म आपको ब्लूम करने के अंदर, जैसे लिफ्ट का भी तो इजाद हुआ ना। आप सीढ़ियां थोड़ा ना चढ़ते रहोगे सारी जिंदगी, कई लोग नहीं चढ़ पाते, तो उनके लिए क्या करो, आपने लिफ्ट का इजाद किया। उसी तरीके से आपने हीलिंग का इजाद किया। आप ऊपर नहीं जा पा रहे थे, तो आपको एक मोडालिटी मिल गई जो आपको क्लियर करके आगे ले जाएगी। ये सबसे हम्म सिंपल फॉर्म लगा है मुझे अभी इसको एक्सप्लेन करने का। आई मीन, हम्म बिकॉज इट इज अ वेरी लाइव एंड आई एम प्रेजेंट विद यू एट द मोमेंट। तो मैं उस चीज हम्म को उसी तरीके से संबोधित कर रहा हूँ कि हाँ, ये चीज ऐसे है, तब मेरे को जैसे अभी जो समझ में आ रहा है वही मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। हम्म। दिस इज हाउ आई परसीव हीलिंग एज वेल, कि ओके। इट इज नॉट समथिंग दैट यू ब्रोकन। हम्म यू नॉट ब्रोकन, नो बडी इज ब्रोकन। हाउ कैन यू हम्म ब्रेक योर सेल्फ? आई मीन, खुद सोचो, आई एम हम्म ब्रोकन, हाउ डू यू ब्रेक? हम्म You don't break until you don't want to break yourself. It's a हम्म choice. If you want to go and break yourself, it's a choice. There is always a हम्म। way which says there is more to life. या अच्छा, आप हीलिंग करते हैं ओनली योर टू योरसेल्फ एंड योर वाइफ, और डू यू डू इट टू No, विद अदर पीपल I, आल्सो? we do healing camps also, and ओके। जिसके अंदर it is more like whatever you choose to give to a healer. It can be a rupee also, and I will ओके। feel content in it. What matters more to me is to give you that हीलिंग मोडालिटी। जो चीज हम कर रहे हैं वो आपको भी महसूस हो, उससे आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या बेटर हो सकती हैं। आई मीन, बेटर का मतलब कुछ मैं इस तरीके से लूंगा कि बेटर को ऐसे ना लीजिए कि आप आज जो चाय पी रही हैं वो कल आपको बहुत अलग सी लगेगी। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, जो जो चीज जहां कहीं पे भी न्यूट्रिएंट्स लेवल या एनर्जी लेवल के अंदर ब्लॉकेज आ रही है, वो चीज वापस आ जाएगी, आपकी बॉडी उसी जगह आ जाएगी जहां के लिए वो बनी थी। आई एम जस्ट गिविंग restoring the metabolism and the energetic field of your body, that's it. So I do it मे to बी other द people. थिंग इज I And I love healing. I mean, I love to give that healing to everybody. um, Maybe this is something I have learned from Ma. you know I couldn't be a doctor like her. I mean, ऐसा नहीं था, मेरा मन नहीं था करने का।
पर मैं कुछ इस कदर कलर्स में और इसमें चला गया कि जिंदगी जो सिखा रही है मुझे वो बहुत ज्यादा कुछ था, तो मेरा एक्चुअली ध्यान गया नहीं। बट हाँ, हीलिंग की तरफ एक ध्यान जरूर जाता है। आप किसी को, बिकॉज ज्यादा दवाई खाने के भी साइड इफेक्ट्स मैंने देखे। हम्म। यू नो किसी किसी को दवाई नहीं चलती, मेरे को पुदीना हरा नहीं फिट होता बॉडी में, आप मुझे पुदीना हरा दो, मेरे को उल्टी होगी। आई मीन इट हम्म। डजंट डू द जॉब विच इज सपोज टू डू। So it हम्म। happens with everybody. Everybody goes through that. So why go through something like that and not take up as when your bodies can heal yourself? Truly, Yeah. it can with a support or without a support. जैसे So, there is Varunjay, do this you some. read? जी Do मैम, you I read? do. Read. I do. I do read. I do read. Hmm. मैं तो कुछ भी उठा के पढ़ लेता हूँ मैम। कोई Acha. ऐसा ना तो, and it is something like I am not biased here as well. Mhm. Fiction, non-fiction, self-help, comic, you know, anything, biography, autobiography, whatever it is. ये नहीं कि ये पर्टिकुलर जॉनरा ही पढ़ूंगा, क्यों? ये तो कहीं नहीं लिखा। मतलब you're open to Mhm. read anything you want to, so take that in yourself. Read as much as you can, because it is not just that reading. It is you when you pick up that book, when you shuffle through those pages. Mhm. उन पेजेस की एक अलग सी खुशबू होती है। जो पुरानी किताबें होती हैं उसकी खुशबू बड़ी अच्छी सी होती है, वो मस्की मस्की सी होती है, यू फील वेरी नाइस। एंड दोज आर लाइक ऐसे क्रिस्प, हाथ से आप करते हो तो एक आवाज जो आती है ना, इट मेक्स यू फील अलाइव। सो यस, आई लव रीडिंग, आई लव रीडिंग, आई रीड एवरीथिंग। आई मीन फ्रॉम, इट कैन बी एनीथिंग। कई बार फ्रेंड्स फैमिली सब लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट कर देते हैं, तो मैं वो पढ़ लेता हूँ। नहीं तो मैं रास्ते में Mhm. ऐसे ही नॉर्मली चल रहा हूँ और there would be no plan of buying anything, but I would just go to a bookshop, see what is there in the shop, and whatever I want to, or my body feels, drawn towards learning, I would rather pick up that book and definitely would love to go through it. क्योंकि Mhm. these are not just books, ये किसी की मेहनत है। You see, I see the writer as an artist. You see, so Mhm. मैं तो I my utmost regards to all the artists, those who create and those who are actually creating life. Mhm. I mean, हम आर्टिस्ट को थोड़ा सा ज्यादा सिग्निफिकेंट बना लेते हैं, बट एवरीबडी इज एन आर्टिस्ट विद इन देयर लाइव्स। आई मीन, सुबह उठ के जो मैंने फीमेल्स में देखा है, सबका करना, घर का ध्यान रखना, then go through the harshness of realities also, and still you are you you bring a breath of Mhm. so much positivity in the house. Yeah, because one of my paintings, like the feminist, it is Mhm. to all Mhm. those females who've been oppressed, who've been hushed, who've not been who've been told what to do and what not to do. It is for them. Be bold, be beautiful, move forward in life, create the life Mhm. you want to create for yourself. I mean, you don't feel within yourself or doubt Mhm. yourself that you're not powerful, you're not beautiful, you cannot create. You know, that is like, that is something I feel every day, to all the females कि नहीं, आप लोग करो ना, खुल के करो। जो लोग Mhm. रोकना क्यों है? पेंटिंग के लिए भी मैं सबको यही कहता हूँ, रोकते क्यों हो खुद को? हम सोचेंगे आइडिया फिर आएगा हमें। अरे स्क्रिबल ही कर लो। Mhm. अरे पुराना छोटे बचपन में जैसे क्लाउड बनाते थे वो बना लो। आप बिलीव नहीं करोगे, कई बार आप ये ऐसे छोटे छोटे डूडल्स बनाते हो, आपको आइडियाज में टक से आ जाते हैं। एंड एवरीबडी, ऑल द हाउस वाइफ्स, जिनके मन में ये होता है कि नहीं, दे शुड क्रिएट समथिंग इन देयर लाइव्स, यू ऑल आर क्रिएटिंग अ हाउस। यू मेक अ हाउस अ होम। यू सी, देयर इज क्रिएशन एवरीवेयर हैपनिंग। हेलो।
Am I audible? Hello. Hello, I Yeah. don't know what हाँ. आ, happened. वो एक्चुअली क्या हुआ कि आपका जो विंडो था ना वो एकदम फ्रीज हो गया एंड Hmm. द लास्ट इमेज वाज दैट्स इट. Hmm. उसके बाद फिर वापस रिफ्रेश करने के बाद एकदम से अब आप नजर आए हो. हाँ, correct. मैंने दोबारा बिकॉज मेरा नेट इंटरनेट वाज टोटली जीरो देयर वाज नो दिस थिंग इट सडनली वेंट ऑफ आई डोंट नो व्हाई Oh, हाँ ओके हाँ. वी वर टॉकिंग जी अबाउट मैम. वी वर टॉकिंग Our अबाउट life. यू वर टॉकिंग अबाउट हाँ Yeah, I was टॉकिंग अबाउट on फेमिनिज्म that. Yeah, I mean, the upliftment of, you know, that is what that painting is all about. I mean, हम्म and it is. I mean, I have seen more. मतलब जैसे मेरी नानी माँ की elder sister जो थी, सरला सरला ठकुराल. She was she lived in Delhi and उनके अंडर में मैंने अपनी PhD भी कंप्लीट की थी इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स. तो और मेरा बचपन भी उनके साथ कुछ ज्यादा ही बीता है. मैंने शी वॉज वन ऑफ दोज टीचर्स. ठीक है. ओके मतलब वो प्रॉपरली सिखाएंगी तुम्हें कि नाक कैसे बनती और कितनी अलग अलग तरीके की नाक हो सकती. तो आंखें खोली रखा करो, हर किसी की नाक देखते रहो और फिर उन नाकों को रात में बैठो बनाओ, चाहे वो 50 तुमने देखी हो या 100. तो उससे क्या होगा, आप यहाँ से और आपका कोरिलेशन कराने की कोशिश है. एंड दीज आर वेरी स्मॉल वेज ऑफ टीचिंग हाउ टू क्रिएट, नॉट टू कॉपी. यू सी, टेढ़ा बना इज नॉट द प्रॉब्लम. जरूरी नहीं है नाक वैसी दिखनी चाहिए, तुम्हें समझ में आनी चाहिए तुमने जो देखी वो यही थी. आगे वाला दर्शक अपने आप समझ जाएगा कि ये नाक ही है. तो एंड शी वॉज इंडियाज फर्स्ट लेडी कमर्शियल पायलट. So I have seen females like these, strong, bold, beautiful, you know, very graceful, moving through society, moving through life, creating a beautiful moment and creating beauty within their lives and everyone else's whom they are touching. तो जब आप इतना कुछ देखते हो तो फिर ऑब्वियसली यू नो एक अंदर से आपका मन भी वैसा ही हो जाता है. अगर आज भी जैसे I have learned a lot from mom, my grandmother. I mean, I did, and my father also. They said my father takes mom as the Devi, in her life, who saved him from, or who, जैसे my father fell off an horse during a film shoot when he met mom while he was admitted in Dullabji. और प्यार हो जाता है जब दो पवित्र आत्माएं आपस में होती हैं, कम्युनिकेशन आंखों से होता है तो हो ही जाता होगा.
ये तो नॉर्मल mm, सी वो है, समझ जाता है. एंड mm, ही स्टिल इज लाइक योर मदर इज अ देवी. एवरी फीमेल ऑन द प्लेनेट इज अ देवी. mm, हम लोग पैदा ही, हम धरती माँ ही तो कहते mm, हैं. I mean, everything is because of the females on this planet. And we should be, as human beings, we should feel happy about the fact that I surely believe we can learn a lot from every female on the planet. कई चीजें हैं मैम, कई चीजें हैं. अ, कई बार सिर्फ आप चाय कैसी बना रहे हो उसी को देखते देखते आप समझ जाते हो जिंदगी. इसके लिए कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये सामने होता है आपके. बस आपको उस मैजिक को और उस फिनोमिना को देखना है. आप mm, देखोगे, आप अपने आप समझ जाओगे. इतना दिमाग तो ऊपर वाला दे के ही भेजता है डेफिनेटली. आई मीन पीपल विद, जैसे आई कम अक्रॉस किड्स हु आर ऑटिज्म, हु हैव ऑटिज्म, and who have ADHD and all these sort of mental disabilities as we perceive. But I see it as the uniqueness they are, you know, mm, and the kind of thought processes they have, which go beyond the human intellect itself. छोटा सा बच्चा आपको रामायण का वो सार बता देगा जो आप सारी जिंदगी पढ़ के भी नहीं समझ पाए. mm. एंड दे कैन क्रिएट मास्टरपीसेस विद इन द वे दे आर. सो हीलिंग के दौरान हाँ, डेफिनेटली दीज काइंड ऑफ किड्स डू कम अलॉट. वो उसमें अच्छा. अडल्ट्स भी होते हैं. आई मीन उसमें इट्स नॉट जस्ट Mm, किड्स, दे आर अडल्ट्स आल्सो हु हैव नॉट बीन डायग्नोस्ड एज mm, ऑटिस्टिक एंड दे आर वो. mm, एंड दिस इज मोर हार्श बिकॉज अब दोबारा से सीखना तो कोई नहीं समझ पाएगा. तो वो सर्वाइवल mm, मोड में अपने आप को जैसे चलाते जाते हैं. mm, दुनिया समझ पाए तो ठीक, नहीं समझ पाती है तो वियर्ड है, फ्रीक्स हैं, देयर आर मेनी लेबल्स. mm, बट हाँ, ऑल आई बिलीव इज दे आर द मोस्ट यूनिक एंड मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आर mm. देयर ऑन द प्लैनेट स्टिल. Yeah, तो ये सब आते हैं because हीलिंग में. they are uninterrupted by the mind, ruled by heart. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. Mm, mm. बिल्कुल सही है So मैम. tell us more about your dad. I want to know. He's one of my uh, favorite actors. Must tell him that. uh, that because we have the same zodiac sign, we both are cancerians. So एक वो भी हम दोनों मतलब he has not been more like a father. Mm-hmm. His father was his best friend. ठीक है, Mm, वो मेरे साथ भी उन्होंने वही किया. I'll be a friend of yours, you know. mm, ठीक है. जहाँ उनको देनी होती है इज्जत और ये नहीं बोलना होता है कि ओ यार क्या कर रहा है, वो तो मैं भी नहीं बोलूंगा, ऑब्वियस सी बात है. बट हाँ, वो mm, दोस्ती को इसका मतलब उनके लिए ये है कि बी ओपन विद मी. mm, जो हम ऑनेस्ट होके एज फ्रेंड्स बात कर सकते हैं वो शायद हम बाप बेटे की तरह शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत mm, सारा स्ट्रक्चर है. और हर फैमिली में होता mm, है कि आप स्ट्रक्चर्ड हो जाते हो तो बाप से कह नहीं सकते पता नहीं पिताजी क्या mm, कहेंगे, या आप पढ़े लट. mm, अब तो कहते हैं हाँ, तो mm. ऐसे ही होता है कि भाई आज तो पिताजी सूट देंगे, गारंटी लिखवा ले भाई. आज तो यू नो कोई पूछ ही ले, आज ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है, अरे यार पिछले महीने हैप्पी बर्थडे था, पिताजी को आज याद आया. Mm, तो उन्होंने अच्छे से so बट his ideology was more like mm, every time he was laughing, he was joking, and it is not ऐसे जोक्स जो आपको इतना ज्यादा हंसा देते हैं कि मैं लिटरली लाल हो जाता था, मेरे आंसू निकल रहे होते थे और मेरे को रोकना मुश्किल होता था अपने आप को. तो he okay. has been very good friend. He has been a person who has uh, understood life in his way. एक अपने तरीके के फिनोमिना है, एक अपने तरीके के सोच विचार रखने वाली शख्सियत है. और मैं उनको कई बार पिता के रूप में नहीं, एक सीनियर आर्टिस्ट के रूप में ज्यादा देखता हूँ. तो Mm, मेरे लिए वो उस लेवल पे कुछ और हो जाते हैं. बट इसमें ये नहीं होता कि मेरी उनसे कोई दोस्ती खत्म हो गई. वो दोस्ती है, बट अगर mm, आपका दोस्त आपका मेंटोर बन जाए mm, या वो आपको पुश करे आगे ले जाने के लिए,
मैं Hmm. कहता हूँ वो दोस्ती बहुत अच्छी होती है। Hmm. बट उसके अंदर ये नहीं होता कि उसके अंदर वो आपको कुछ ऐसा बोलेंगे कि आप नीचे आ जाओ। और अगर Hmm. बोलते भी हैं तो आप कैसे उस चीज को परसीव करते हो। आई मीन, आई Hmm. बिलीव विद इन एवरी नेगेटिव कॉन्वर्सेशन देयर लाइज अ पॉजिटिव स्ट्रैंड ऑफ एनर्जी। If you can transmute that energy from negative to positive, every negative conversation becomes positive. Hmm. सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना। तो अगर Hmm. पिता आपको डांट रहे हैं या पिता आपको कुछ समझाने के लिए थोड़ा सा अपना वॉइस मॉड्यूलेशन ऊपर नीचे कर देते हैं, तो Hmm. ठीक है, समझने की कोशिश करो, क्योंकि उसने भी जिंदगी देखी भाई, यू नो। Hmm. और when my mother has always loved him every single second, the kind of, you know, soulmate twin flame love you see, or you don't, Hmm. मतलब जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं, it is that kind of a thing only with lot of love and affection between both of them. Hmm. So हाँ, मेरी और उनकी दोस्ती काफी रही, but there have been times where we have indulged ourselves in our work, in our artworks, Hmm. to that level where we haven't talked to each other for years, because सबका एक फेज होता है ऑफ इवॉल्विंग। तो मैं कई बार नहीं बात करता, वो कई बार नहीं बात करते, बट इससे हमारा रिश्ता नहीं खराब होता। हम जहां खत्म Hmm. हुआ था वहां पे खड़ा होते हैं, वापस बात करते हैं, विल बी द सेम। Hmm. और हर Hmm. रिश्ते में यही होना चाहिए इनफैक्ट, यू Yeah, नो, that's the best thing that can happen. Yeah, true. बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे ही कीप्स ऑन, जैसे वी बोथ आर लाइक द डाई हार्ड फैंस ऑफ आवर ऑफ ग्रैंडफादर, not because we Okay. have a lineage, no, Yeah. because we understand the beauty of his work as Hmm. artists, you know, कि नहीं देख कितना अच्छा काम करते हैं, कितना नेचुरल है, यू नो, कितना Hmm. ठहराव है जिंदगी में, यू नो। Hmm. तो ये चीजें सीखने की ही थी उनसे। उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, एंड टचवुड वो बहुत प्यारे हैं, आई लव माई फादर। बट जैसे उन्होंने तो देखा, बट उन्होंने, जैसे मैंने नहीं देखा तो उन्होंने मुझे दिखाया, Hmm. you know, कि भाई ये थे, देख ऐसे सोचते थे, मैं उनके ऐसा था, यू नो। हम तो Hmm. ये भी डिस्कस करते थे उनके पैर पे कितने तिल थे। अच्छा. तो आई मीन, आई ही हैज मेड मी वॉक थ्रू हिज लाइफ, Hmm. and that is the greatest gift he could have ever given me after bringing me to this planet. Hmm. Because because Balraj Sani is not just a name, it's a feeling. Hmm. It's a feeling of simplicity. It's a feeling of transformation of the human soul and human brain, where he, you know, not by just saying, but just by doing things in his life, uh, he has created that tranquility between all three stages of life, you know, the mind part, the body, the soul, aligned together, working very harmoniously within the body and the other people around it. तो Hmm. वो सीखने को हमें काफी ज्यादा इंट्रीग्ड होता है। तो And it must make डैड के, you proud to have his genes. मैम Believe me. मैं इस बात को ना कुछ इस तरीके से कहता हूँ कि मैंने शायद पिछले जन्म में कुछ अच्छा ही किया होगा। Hmm. या कुछ ना कुछ तो अच्छा ही ऐसा किया होगा कि एक इतनी अच्छी माँ मिली, पिता मिले, दादा मिले, Hmm. वाइफ मिली, बेटियां मिली हैं। Hmm. आई मीन सही में कुछ अच्छा करा होगा मैम। या तो Hmm. आई मीन अगर हम पीछे कभी सोच भी पाए तो क्या पता मैंने किसी किसी ऐसे टाइम में किसी को रोटी या खाना खिलाया हो या पानी पिलाओ जब उसकी जिंदगी, यू नो, यू नेवर नो, दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट क्रिएट द नेक्स्ट लाइफ टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल समटाइम। आप सारी जिंदगी कुछ नहीं करते और एक सेकंड के लिए आप कुछ ऐसा कर दो विच चेंजेस द एंटायर बैलेंस ऑफ योर लाइफ एंड बियॉन्ड। तो मैं इस चीज को ऐसे ही लेता हूँ कि कुछ तो अच्छा ही किया होगा। और मैं हर बार सबको यही कहता हूँ, जितने लोग मुझसे यही सवाल बार बार करते हैं, मैं हमेशा जवाब वही रहता है, बिकॉज मैं हर दिन वही महसूस करता हूँ। तो ये है, आई मीन, इट 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 इज वेरी,
emotional to me. When I feel all this, and I'm living a life like that. Uh, People should do something within their lives. You know, mm, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे आज पे ही डिपेंड करता है. तुम आज कैसे हो वही तुम्हारा कल दर्शाएगा. और वही कई बार तुम्हारा जो बीत गया है वो भी ठीक हो जाता है जस्ट बिकॉज तुम आज में कैसे हो. mm. You know? So that is how it is. Yeah. So, up exhibition, are you taking this exhibition to some other cities, some other places? What Yeah, are this? जैसे I'll be taking this to Bombay. You know, Hmm. इसके बाद हम लोग बॉम्बे जाएंगे next year. And we have other plans also. So we might be traveling throughout the country and then throughout the world. You know, Okay. so This this is exhibition. like this exhibition will keep on evolving. You know, Okay. there'll be more different artworks and different. Uh, I mean, this is my journey of life, so it keeps on evolving. Uh, Oh, अभी तक जहाँ तक मैं पहुंचा हूँ अभी जैसे मेरी बेटियां भी 6 साल की हैं. They're both twins, not okay. identical, but yeah. So they are evolving. So by the next year they'll be 7. God knows कितनी beautiful memories create होने वाली है. You know, I'm so excited, Mhm. and so will this exhibition also. Every day is a beautiful day. Every single moment I walk while I am in the exhibition hall, um, looking at my artworks, they speak. I talk to them. Mhm. I sit there for hours and keep looking at my own artworks. Um, Mhm. and there is no sense of because कई चीजें मेरे में है नहीं. जैसे आई वुड से कि मेरे में ईगो नहीं है. मैंने ईगो को कुछ इस Mhm. तरीके से समझा कि ई गू यू सी गू आई मीन Mhm. ई गू सो समथिंग विच इज excreted. Why would I Mhm. have something which I have which is which has the energy of excretion within my life? सो वो नहीं है. ऐसे कई सारे चीजें हैं जो इस चीज से रिलेटेड है, वो नहीं है मेरे में. तो Mhm. लाइफ इज मच बेटर लिविंग. दिस वाई आई ब्लेस द यूनिवर्स एंड गॉड. थैंक यू. ये अच्छी अच्छी चीजें आपने मुझे नहीं दी. थैंक गॉड. आई मीन एबल टू मेरे लिए अच्छा लगता है मुझे कि इफ आई एम वॉकिंग ऑन द रोड मैं कहीं भी Mhm. आई गो Mhm. एंड आई विल हैव टी. यू नो दैट सिंप्लिसिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ लाइफ, लिविंग अ लाइफ. कहीं भी Mhm. बैठ गए, पेड़ आया वहीं बैठ गए आराम से. Mhm. ये चीजें Mhm. मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. Mhm. So, Varunjay, as we come to an end of this beautiful talk with you, I want to uh, ask you, is there an advice that you would like to give to upcoming artists about how they should go about it? सबसे पहली चीज जो इन लोगों को करना चाहिए वो ये है, दे हैव टू कीप ऑन क्रिएटिंग. नो मैटर वॉट एवर यूर फीलिंग, यू मस्ट पुट इट ऑन पेपर. अब जो भी आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वेदर इफ somebody is doing mandala, they should create mandala the way they want to. They जिस तरीके से वो देखते हैं, I mean not the way they are taught, the way they feel like. It can be a zigzag line also, it can be something which is unstructured also, and it can have the mandala itself. So they should do that. People who are singers, dancers, they should all create as much as you can. जितनी वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट्री बाहर आएगी और बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं. आई मीन मैं जैसे आज सुबह मॉर्निंग में with my team जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, and who have been very supportive, and who've been they are artists themselves also. So I just had a conversation, not conversation, but I just mentioned on the group कि यहाँ पे दिल्ली में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएं, because I would like to go by and start playing, because मैं ज्यादा देर ऐसे बैठ नहीं सकता idle. Either I am painting or playing music, or I want to walk. Then अगर कुछ और Mhm. नहीं है तो I would rather pick up my bag and keep walking. Mhm. So
मैं बस वही पूछा था. So I believe that every artist, जो अपकमिंग है या जो बडिंग है या जो जो कर रहे हैं, यू शुड क्रिएट एंड द चैनल्स टू योर आर्ट वर्क. और जो लाइफ के अंदर आप बनना चाहते हो या जो जहां आप अपनी आर्ट को ले जाना चाहते हो, वहां वो अपने आप पहुंच जाएगी. बस you have to be having that clarity within yourself, that truth, you know, of creation. I mean, be unique. Don't copy. Make something what you feel like creating. And मैं ये कहूँगा कि यू डोंट हैव टू क्रिएट एज इफ कि नहीं आपको सन बनाना है तो आप सन बना रहे हो. आपका सन स्क्वायर भी हो सकता है. आपका सन ट्राइंगल भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है. ये कहाँ लिखा है कि सन गोल करना ही? किसी को लग ही नहीं रहा हो सन गोल है तो वो ट्राइंगल बना Mm, दे, स्टार बना दे. So mm, uh, be vulnerable to explore, make mistakes in the field of art. Don't put yourself down when all these things happen. These are just moments that are happening so that you can create better. So mm, keep creating, have that flow within yourself, your life, your thoughts, and just be there on canvas every day. mm. That is something I would say to the artists हाँ, around and ओके, worldwide. मतलब रुकिए मत, चलते रहिए. हाँ, मतलब रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है. आप जिंदगी भी तो चल रही है. आप हर दिन, हाँ. एक्सक्यूज मी, आप हर दिन सुबह उठ रहे हो, जा रहे हो. Mm, एवरी डे mm, यू आर लिविंग अ लाइफ. जस्ट mm, कंटिन्यू दैट सेम एनर्जी एंड वाइब्रेशन इन द आर्ट. क्योंकि mm, आई मीन जैसे आई सी पीपल हु से कि हम थोड़ी देर पेंट करते हैं फिर हम नहीं कर पाते हैं. क्यों? इज माई mm, क्वेश्चन. mm, क्या रोक देता है? वो बोलेंगे कि जिंदगी में ये हो गया, वो हो गया. और ठीक है, mm, रात को कितने बजे सोए थे आप? 12. तो क्या कर रहा था? कुछ नहीं, मैं कब तो पेंट ही कर लेता. mm, सारे दिन की थकान ना उससे निकल जाएगी. ये फिनोमेना मैं सीख पाया नानी से जब वो खाना बनाती थी. mm, आई मीन mm, शी वाज अ ब्यूटीफुल कुक एंड अ ग्रेट आर्टिस्ट. एंड mm, द वन थिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम हर वाज दैट खाने के अंदर अगर आप अपनी रूहानियत डाल दें तो वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है और लजीज हो जाता है. और वही आर्ट में भी करना है. सेम थिंग. mm, You have to put yourself there, your truth, mm, whatever it is, whatever how vulnerable it is. Be there mm, yourself. Create what you are, what you feel, and it will just going to be exactly the way which they want to perceive. So uniqueness rakho. Go beyond the human intellect, the thoughts, the processes, which is said, the boundaries, point of views, judgment, construct. Go ahead. सब एक तरफ पकड़ो, एक तरफ रखो और शुरू हो जाओ. mm, क्योंकि इन सब के साथ तो हो ही नहीं रहा ना. mm. Thank you so much, Varunjay, for talking to us. It was pleasure talking to you, and I literally enjoyed this conversation with you. So thanks a lot, and Uh, I wish you all the best for your show, for this Thank ongoing you, ma'am. show, Thank and you. your forthcoming shows. Wherever you take them, Thank you. I wish you all the Thank you. success. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for having me here, ma'am. Thank you. Yeah, thank you. Yeah. Bye.